गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया बेटा। स्टार्ट द न्यू चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 इज अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बेटा, सबसे पहले मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स वी स्टडी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। A coordinate geometry is the branch of mathematics in which the study the position of any object, the position of any object lying in a plane with the help of two mutually perpendicular lines. Two mutually क्या होता है बेटा? Two mutually perpendicular lines in the same plane. In the same plane. Clear हो गया बेटा? ठीक है? Introduction है बेटा। सबसे पहले कि मैथमेटिक्स ऐसी ब्रांच है कि मैथमेटिक्स के वी स्टडी द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट की बेटा पोजीशन आपको चेक करना है कि कौन सी पोजीशन जो प्लेन में है, तो उसके लिए बेटा कि विद द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइंग इन अ प्लेन विद द हेल्प ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इन द सेम प्लेन। क्लियर होगा फर्स्ट पॉइंट। नाउ नंबर 2, ये जो बेटा सेम प्लेन ऐसा है, किसने साइंटिस्ट कौन सा साइंटिस्ट था कि दिस स्टडी वाज इनिशियली डेवलप्ड, स्टार्टिंग से इनिशियली डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट नेम रेने डिकांत ने बेटा फाइंड किया सबसे पहले कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है कि पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइक इन अ प्लेन विद द हेल्प ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू लाइंस कि कौन से पोजीशन में, जैसे मान लो एक्स एक्सिस हो और वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, कि टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन है कौन से ऑब्जेक्ट पे प्लेन है, कि सपोज ब्लैक बोर्ड हमारा वन टाइप ऑफ प्लेन है बेटा, बुक होती है बुक वन टाइप ऑफ प्लेन, ठीक है, के नाउ दिस स्टडी कैसे साइंटिस्ट का नाम रेने डी कान एंड द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग बाय द पोजीशन ऑफ पॉइंट, के पोजीशन है बेटा जैसे मान लो बुक को रखा पोजीशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड एज अ कार्टेशियन सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या बेटा के पोजीशन ऑफ पॉइंट, के पोजीशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन is known as a Cartesian system, is known as a Cartesian system। सपोज ए प्लेन है बेटा, यहाँ पे मैंने ब्लैक बुक रखा है या पेन रखा है, ये कौन से पोजीशन पे होगी, तो उससे क्या बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कार्टेशियन सिस्टम। तो नाउ कार्टेशियन सिस्टम के टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो x एक्सिस के x एक्सिस है एंड नाउ y डैश, x डैश एंड y डैश। तो x एक्सिस कौन सी लाइन बोलते हैं बेटा? x डैश इज कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। याद रखना बेटा कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, व्हिच पॉइंट? एट पॉइंट o इज अ ओरिजिन। क्लियर हो गया कि दो लाइन है बेटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, व्हिच पॉइंट होगा? इज अ ओरिजिन। उसको क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन। तो x एक्सिस को क्या बोलते हैं? x एक्सिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, y डैश इज अ वर्टिकल लाइन, y डैश इज अ वर्टिकल लाइन एंड नाउ x डैश होल लाइन, x डैश is called as a x axis, but which line is a horizontal line, and now y dash is a vertical line, this called as a y axis। clear कि कार्टेशियन सिस्टम क्या बोला कि टू म्यूचुअली टू लाइंस है, which lines? x dash and y dash now intersect at point o, is a origin, तो x dash is the x axis is a horizontal line and y dash is a vertical line, and x dash whole line x dash is called as x axis and now y dash is called as a x dash is the x axis and y dash is a y axis। x axis clear है now कि ox, तो ox क्या बोल रहा है? ox now direction of ox is a positive x axis, ox is a positive x axis and now oy which direction? oy equal to positive y axis कि OY and OH dash
OH dash equal to is a negative x-axis, and now OY dash equal to negative y-axis. Is it clear? OX is a positive x-axis, OY is a positive y-axis, OH dash is a negative x-axis. OX, so OX is a positive, OY is a positive y-axis, OH dash is a negative x-axis, whole are negative, OY dash is a negative y-axis. Is it clear? क्लियर हो गया बेटा कि कार्टेशियन सिस्टम फिर से एक बार रिवाइज कर दे कि नाउ कि मैथमेटिक्स वी स्टडी द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट lying in a plane with the help of two mutually perpendicular lines. Okay, two perpendicular lines, they perpendicular lines in the same plane. This study was this study was initially developed by the scientist name is Nitinsir. किसने फाइंड किया बेटा? Nitinsir ने. The system used for describing the position of point in a plane. ये सबसे important है बेटा कि position of a point in a plane is also known as a Cartesian system. Is known as a Cartesian system. अब now Cartesian system है तो कार्टेशियन सिस्टम में क्या है? कार्टेशियन सिस्टम्स देयर आर टू परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन. के टू परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन इज x dash and y dash is the intersect is point O. तो his name is a origin. His name is a origin. ठीक है? तो x dash is a horizontal line and y dash is a vertical line. Y dash is a vertical line. And now x O x dash whole line x O and x dash is an x axis horizontal line, and now y dash is a vertical line, तो ये जो y axis, तो ox is a positive x axis, oy is a positive y axis, and ox dash is a negative x axis, and oy dash is a negative y axis. Is it clear? The ox x axis, oy positive y axis, ox negative x axis, and oy dash is a negative y axis. X axis clear हो गया? पॉजिटिव x axis और now quadrant. The axis divide the plane into four part. जो प्लेन होते हैं बेटा उसके फोर पार्ट है. The axis divided the plane into four parts. These four parts are is called as a quadrant. क्या होता है बेटा? कि सपोज ये प्लेन है. प्लेन बेटा के टू एक्सिस, के x axis and y axis. How many quadrant? Four quadrant. First, first, second, third and fourth. Clear हो गया? So now x axis y dash, the two line intersect x axis and y dash. First quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. How many quadrant? Four quadrant is there. First, second, third and fourth. So now first one is a x o y. X o y equal to first quadrant. First quadrant. Clear? X o y is a first quadrant. Now second is a y o x dash. Y o x dash equal to second quadrant. And now third one is a x dash o y dash. X dash o y dash equal to
third quadrant. Now last one is a y dash ox. Y dash ox equal to fourth quadrant. Is it clear? के प्लेन में बड़ा प्लेन में कितने क्वाड्रेंट थे? 4 क्वाड्रेंट होते. कि the axis divided the plane. Which axis? Two axes, x axis and y axis. The axis divided the plane into four parts, and these four parts are is called as a quadrant. Is called as a quadrant. So now first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. So which are the first quadrant? X O y dash is the first quadrant. Y O X dash is the second quadrant. X dash O y dash is the third quadrant. Now y dash O x is the fourth quadrant. Is it clear? हो गया बेटा. देखो एग्जाम में ऐसा भी आ सकते हैं बेटा कि ना y dash O x which quadrant? Fourth quadrant. X dash O y dash which quadrant? Third quadrant. And x O y is the first quadrant. Which axis? Two axis, x axis and y axis. Which two line बेटा? x dash. Two line is x dash and y dash. Clear हो गया बेटा? Horizontal line and vertical line intersect which point is a O? Is a origin. Clear हो गया बेटा? Quadrant clear? So now next topic is the coordinates of a point in Cartesian plane. देखो बेटा coordinates of a point in Cartesian plane में हमको बेटा कैसे ड्रॉ करते हैं 1 by 1. Coordinates of point in Cartesian plane. के टू लाइन है बेटा x dash and y dash. देख यहाँ पे देखो x एक्सिस से ड्रॉ किया ये लाइन और ये y एक्सिस से ड्रॉ की. तो ये जो डिस्टेंस है ओनली फॉर ओरिजिन O से डिस्टेंस तो इज कॉल्ड एज x कोऑर्डिनेट. इसको क्या बोलते हैं बेटा? x कोऑर्डिनेट. इसे क्लियर हो गया बेटा? O ओरिजिन O से डिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन x कोऑर्डिनेट. क्या बोलते हैं बेटा? x कोऑर्डिनेट. एंड नाउ O and this distance is called as a y coordinate. Is called as a y coordinate. और जहां पे बड़ा इंटरसेक्ट हो रहा है वैसे यहाँ तो which point P तो is called as a first P in bracket x coordinate comma y coordinate. ठीक है रिप्रेजेंट करना है बेटा. जैसे मान लो कि यहाँ से x एक्सिस से लिया डिस्टेंस हो और y से डिस्टेंस लिया तो P in bracket x coordinate comma y. तो जो x से डिस्टेंस है उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस. किसको परपेंडिकुलर हुआ बेटा? कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस. is a perpendicular distance from the x axis and this distance is perpendicular distance from the y axis. Is it clear? The perpendicular distance from the y axis and this distance is perpendicular distance from the x axis. Clear हो गया? तो now what is the x coordinate? x coordinate is देखो x coordinate कैसे है बेटा हमको फाइंड करना है. now x coordinate of a point is the perpendicular distance from the y axis. क्या बेटा? from the यहाँ से रीड करोगे बेटा कहाँ से कि perpendicular distance from the y axis measure along the x axis. क्या करना है बेटा? measure along the x axis पे पढ़े. दूसरा देखना position के positive along the positive direction of x axis. क्या बेटा? positive x coordinate of a point is the perpendicular distance from the y axis. x coordinate फाइंड करो बेटा. परपेंडिकुलर किसको होना चाहिए? perpendicular distance from the y axis. आपको y coordinate फाइंड करना है तो क्या आएगा? perpendicular distance from the x axis होगा. क्लियर? तो नाउ इन ब्रैकेट पॉजिटिव along the positive direction of x axis और नेगेटिव दो आ सकते हैं हमारे पास. फिक्स नहीं बेटा कि कौन सा पॉइंट हमको रिप्रेजेंट करना है. आपको पॉजिटिव along the positive along the positive direction of the x axis and negative along the direction of the x axis. क्लियर हो गया? तो हमको क्या मिलेगा? x कोऑर्डिनेट मिलता है. क्या मिलता है? x कोऑर्डिनेट. the x coordinate is called as abscissa. याद रखना बेटा x कोऑर्डिनेट क्या बोलते हो बेटा? abscissa बोलते हो. क्या बोलते हो? abscissa. x कोऑर्डिनेट तीस को क्या बोलते हैं बेटा? abscissa. क्लियर हो गया? तो वैसे हमको क्या मिलेगा बेटा? x कोऑर्डिनेट मिलेगा. क्या मिलेगा हमको? x कोऑर्डिनेट. तो सपोज हमको y कोऑर्डिनेट लेना तो क्या आएगा बेटा? x की जगह क्या आएगा यहाँ पे y कि the y coordinate of a point is the perpendicular distance from the x axis. y axis जगह क्या आएगा बेटा? यहाँ पे x axis. measure along the y axis. measure along the y axis. in bracket positive along the positive direction of y axis and negative along the direction of y axis.
तो द x इन y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड, उसको ऑर्डिनेट बोलते हो। क्या बोलते हो? ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। The y coordinate of a point is the perpendicular distance from the y axis। डिस्टोरिक बेटा y x एक्सिस आएगा। हमको फाइंड करना है, y कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, तो क्या आएगा बेटा? x एक्सिस is measure along the y axis in bracket positive along the positive direction of the y axis and negative along the negative direction of the y axis। And the y coordinate is called the ordinate, is called as a ordinate। क्लियर हो गया बेटा कि x कोऑर्डिनेट का, x coordinate of a point is the perpendicular distance from the y axis। यहां पे देखो बेटा perpendicular distance from the y axis मेजर along that, कहां से मेजर करना है हमको? x एक्सिस से मेजर करना है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, तो हमको क्या मिलेगा बेटा? x कोऑर्डिनेट। क्या मिलता है बेटा? x कोऑर्डिनेट। इज इट क्लियर हो गया कि फ्रॉम द y एक्सिस से, फ्रॉम द y एक्सिस मेजर along the x एक्सिस, पॉजिटिव along the positive direction of the x एक्सिस, दो आएगा बेटा यहां पे x एक्सिस भी। देखिए यहां पे पॉजिटिव होगा और इस साइड का नेगेटिव होगा, ले पॉजिटिव along the positive direction of the x axis and negative along the direction of the x axis। तो x coordinate is called as a FCCR। क्लियर हो गया? उसको क्या बोलते हैं बेटा? x कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं बेटा? FCCR बोलते हैं। क्लियर? अब y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो नाउ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द, यहां पे y एक्सिस है, तो यहां पे क्या आएगा बेटा? फ्रॉम द x एक्सिस मेजर करना है, हमको ये फाइंड करना है। यहां से बेटा मेजर करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, तो हमको मिल जाएगा y कोऑर्डिनेट। क्या मिल जाएगा बेटा? y कोऑर्डिनेट and along the y axis and now positive, so along the positive direction of the y axis and the negative along the negative direction of the y axis, and y coordinate is called as a ordinate। y coordinate क्या बोलते हैं बेटा? ordinate। क्लियर हो गया? तो सपोज आपको क्वेश्चन दिया है, सपोज P3 4 है, ठीक है, तो फर्स्ट रिटर्न इज x coordinate, now second is a y coordinate। तो what is the x coordinate, what is the FCC of P? तो FCC of P is 3 and ordinate of P equal to 4। क्लियर हो गए कि what is the FCC of P? तो फर्स्ट होता है x coordinate होगा, वो आपका क्या है? FCC आएगा, और जो सेकंड होगा बेटा वो आपका y coordinate, वो क्या होगा बेटा? ordinate। क्या होगा? ordinate। क्लियर?